Right, here we are. My name is Rajiv K. Bajaj and you're watching me on the RKB show. As usual, along with me, right now, Advocate Pradeep Nambiar. और इस वक्त एक बार फिर हमारे साथ हैं नितिन भाई किलावाला. नितिन किलावाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको यहाँ पर आने के लिए. Thank you so much, sir. My pleasure too. Last time we met at the metro. Stalin Saab, last time we met at the RA Forest. Mr. Badhena, we are meeting for the first time. Thank you so much. And Ms. Wagh, we are meeting for the first time. Right. Shweta Wagh हमारे साथ हैं. जी. जनाब आप लोग ये बताएं कि अभी शुरू करने के पहले जो मैंने आप लोगों से कहा कि आज की तारीख में मुंबई का जो पर्यावरण है, मुंबई एनवायरनमेंट, ये ऐसा लग रहा है इट इज अंडर अटैक. एम आई राइट और नॉट? यस और नो? Absolutely, and that is the issue. Right. That in the name of development, the city is being absolutely mercilessly ruined. जी. Now there is a way, if you go, for example, to Singapore, you जी. will see development with environment. Right. Why can't it be done in Mumbai? Correct. So why can't it be done in Mumbai? There is a complete lack of political will. If you see, Mumbai's biggest challenges were right behind me, the sea level rise. The water जी. is coming into the city and you need to keep areas free from construction. और एक बार फिर हम लोग बता दें, इस वक्त हम लोग कार्टर रोड पर हैं और कार्टर रोड का ये प्रोमेनाड है. एक जमाने में दिस एंटायर प्लेस यूज्ड टू बी फुल ऑफ मैंग्रोव्स, राइट? So what happened? Here once upon a time. That was a long time ago, sir. It's a long beach once upon a time, and then subsequently it got eroded and the sea is rushing into the city. Right. So you have a situation where Mumbai and Mangalore have universally been recognized as cities which will be hit maximum by sea level rise. जी. So I say flooding के time पे CRZ notification जो है that becomes very important because it tells you stay away from the high tide line and do your constructions away from it. But what the Maharashtra government is doing along with the help of the central government is to push the water back and create more land for construction nearer to the sea and bring in all kinds of projects which are not needed on the coastline. लेकिन हम लोगों ने ये देखा है श्वेता जी कि जहाँ तक समंदर का सवाल है, आप समंदर को जितना मर्जी पीछे कर दें, आखिर में समंदर आएगा ही आएगा आगे. Actually, the CRZ protected the intertidal and the intertidal zone between the high tide and Yes. the low tide line, and there were regulations preventing certain activities in those areas. Yes. But the recent amendments, the spate of amendments to the CRZ regulation has diluted the CRZ, and now stilt roads were allowed for the construction of the sea link. Now for the construction of the coastal road, they are allowing reclamation. So the regulations and laws are actually being diluted for specific. So what will be the effect of this? What will be इसका impact क्या पड़ेगा ये बताएं. There will be multiple impacts. One is the impact on the ecology, because the CRZ also protected the intertidal zone, which is not only ecologically important, but even communities who are traditionally dependent on this ecology for their livelihoods. For example, the fisher community, and for generations they have destroyed almost sustained. completely. So absolutely, the ecology of the intertidal zone, once it is destroyed, the change is irreversible, and it will actually mean a decline of fishing from the entire city of Bombay. Not just decline, complete destruction. Complete destruction. हम लोग गए थे, आप लोगों को याद होगा कि हम लोग वर्सोवा में गए थे, वर्सोवा जेटी पे, और वहाँ के जो मछुआरे हैं, हमारे दर्शकों को याद होगा, उन्होंने ये बताया था कि एक ज़माना था कि वहीं वर्सोवा जेटी के पास से एक बढ़िया मछली मिला करती थी. रावस से लेकर के पॉम्फ्रेट से लेकर के भेटकी तक एक चीज़ वहाँ मिला करती थी. आज की तारीख में वहाँ पर कोई जिंदा चीज़ नहीं मिलती. देयर इज़ नथिंग अलाइव ओवर देयर. नितिन किलावाला साहब, अब आप ये बताएं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, मेरी समझ के बाहर है. हो सकता है कि मैं पढ़ा लिखा ना हूँ जैसे आप सब लोग हैं. आपसे जानना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने, प्रदीप भाई, बांद्रा वर्ली सीलिंग बनाया. हाँ जी. आइडिया ये था कि बांद्रा टू वर्ली, वर्ली टू नारीमन पॉइंट, और इस तरफ से बांद्रा टू वर्सोवा तक जाएगा. ठीक है साहब. अब मुझे ये बताया जाए कि ये कोस्टल रोड क्या करेगी जो बांद्रा वर्ली सीलिंग नहीं कर रहा है, ये जरा बताया जाए. So यही मेन मुद्दा है. मतलब कि दो ब्रिज, आप कोई भी प्रोजेक्ट देखिए, व्हाट इज द बेसिक इंटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट. जी यहाँ इंटेंट इज इन वन लाइन decongest traffic. जी. But whether it is coastal road या sea link या any और या metro, or any car centric project doesn't reduce traffic congestion. This is first and foremost. Once if this is recognized, this is accepted. मैं कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी सड़क या कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी सड़क हो, ब्रिज हो, कोस्टल रोड हो, अगर वो सिर्फ गाड़ियों के लिए है, यानी सिर्फ 4 व्हीलर्स के लिए है, तो उससे ट्रैफिक कंजेशन खत्म नहीं होगा. Very very crucial in the context of Mumbai city is that there is no concern whatsoever for any project for common man. जी. Whether it is transport, whether it is housing, whether it is how they commute to point A to point B, जी. and they feel कि
कॉमन आदमी का है तो चलता है, समथिंग इज Common बेटर आदमी का एंड चलता दे है। फील के समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन आप ये बताइए, ये कोस्टल रोड की प्रिपरेशन हो रही है, दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पे, वो कोस्टल रोड के जो इतने तबूत जो बीच में लगे हुए हैं वो सब दिख रहे हैं जी। ये सीलिंग का काम है जी। Part of it is the ceiling Right. from Bandra to Versova, Ji. and the stretch between Nariman Point and Worli is the coastal road. जी So there they are actually reclaiming the seabed. So एक बार here- फिर where is it had stopped? Uh, It had stopped around 93, 94 if I'm not mistaken. 1991 we had the CRZ regulation which did not allow reclamation in coastal areas. Also did not allow the construction of stilt roads. Ji. But one by one for all these infrastructure projects our regulations are being dismantled. मतलब And- CRZ 2 तो अभी No, खत्म ही हो गया है। Today there is absolutely no relevance of the CRZ. I think we've lost In out. fact, they reduced that limit also, no? From 500 meters, it's now about 50 meters. If they're allowing reclamation. Why not 1 meter? 1 मीटर कर दीजिए, क्या है? No, now it's gone to Now, negative even in because the they're reclaiming. intertidal Yeah, zone correct, where you yeah. have the most ecologically sensitive habitats, if you're allowing reclamation of that, I think the CRZ is meaningless. One can actually think of it that, like, that we don't have any environmental We regulations. don't have any anymore. environmental laws. अगर वो रीडेवलपमेंट करेंगे या रिपेयर वर्क करेंगे तो उसमें कितना बजट होगा सर? देखिए पैसा जी गवर्नमेंट को क्या मिला है? Yeah. Right. ऑफ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट राइट No, but we give that benefit of doubt. Okay, there is no money involved. It is how you spend money. That is more important. For yeah, and दूसरा सिर्फ you see the foolishness of नितिन जी किलावाला, नितिन भाई किलावाला, हमारे दोस्त नितिन साहब, वो बड़े भले आदमी हैं, बड़े दिल के आदमी हैं, वो हर एक को बहुत ऑनेस्ट आदमी समझते हैं, मानता हूँ जी। बोलिए। नहीं, मेरा एकदम बेसिक इश्यू है कि ये आप कोस्टल रोड बना रहे हैं जी टू डिकंजेस्ट ट्रैफिक। जी जहाँ ट्रैफिक ऑलरेडी कंजेस्टेड रोड्स है वहाँ आप उसको ज़्यादा डिकंजेस्ट कर रहे हैं बाय एलिवेटेड मेट्रोस। जी। तो उसका क्या मीनिंग हुआ? सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज टोटली कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेटेड एल- पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लान। एलिवेटेड मेट्रो से ज़्यादा कंजेस्शन होगी, उसे कम तो नहीं होने वाली। करेक्ट। अभी आप एक सिंपल उदाहरण देखिए फॉर स्काई वॉक्स। जी Officially now that has been abandoned by MMRDA after spending 700 crores and 700 making all our able roads into crippled roads now. यस And look at the condition. Are we? दूसरा क्या एक very fundamental है. For any infrastructure project, you go any good civilized city, people take pride in it. यस Are we taking pride in it? राइट I would जी। actually, I'll be a little more critical here because, in fact, I would say that the coastal road is not even an infrastructure project. It's a real estate project. It's the BMC trying to create land in the sea in the most environmentally sensitive coastal areas, which are really, it's going to impact the city in a big way. I thought it was a vanity project more than anything else. No, I look at it as a real It's a estate political project, project. because Right. it is, Exactly, it is and then they're all doing it political under, they're kind of, they're greenwashing it. They're calling it green reclamation. Now, what do you mean by green reclamation? How can We're gonna reclamation color it green. be environmentally? We're gonna color it. We're gonna paint it all green. जी सालिन साहब बोल रहे थे आप। मैं ये बता रहा हूँ clear cut without mincing any words. This is a game of sharing the spoils. MMRDA and the urban development under the chief minister belongs to one particular party, which is the BJP. They are making it their projects, and the BMC, where only the Shiv Sena has some kind of standing, they are using the coastal road to milk the city. Now, in this process, what Mumbai is going to lose is its beaches. We will lose all our beaches. On your show, I would request you to warn this to every citizen of India, of Mumbai, that Mumbai's beaches will go underwater and this entire city of Mumbai will become a walled city with only walls on the seafront. Right. And that is the ultimate project which these agencies are working towards. Now hold it a minute. Hold it a minute. This is the most dangerous thing. जो अभी स्टालिन साहब ने जो बोला, जहां तक बीचेस का सवाल है, ये कहा गया था कि कोस्टल रोड्स जो है वो बीचेस से बिल्कुल परे होंगी, वो आसपास नहीं आएंगी। क्या जो पुरानी प्लान थी, एक जनाब है, बहुत वेल नोन आर्किटेक्ट हैं, बड़े फेवरेट आर्किटेक्ट हुआ करते थे एक ज़माने में सभी जितने भी रियल एस्टेट डेवलपर्स के, उनका नाम मैं फिलहाल नहीं लेना चाहता क्योंकि इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ लीगल कॉम्प्लिकेशंस। उन जनाब ने एक प्लान बनाई थी कि जुहू बीच जो है, जुहू बीच के नीचे से टनल जाएगी और जुहू बीच ऊपर जो है वो ग्लास का बनेगा, मतलब जो जहाँ पे सैंड है वहाँ पे इट विल बी फाइबर ग्लास। क्या ऐसा ही कुछ कोई सरफिरा प्लान
हम लोग कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, इनका अल्टीमेट एम तो वही है, लेकिन एक चीज है कि साइंटिफिकली बीचेस आर डायनामिक इकोसिस्टम्स, दे नीड इंटरेक्शन विद द सी वाटर एवरी डे, ऑल द टाइम। उसके अंदर आप कोई भी हस्तक्षेप करोगे तो बीच विल बी इफेक्टेड, और ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं है। वाटर विल हैव टू फाइंड इट्स प्लेस। जहां तक समंदर का सवाल है, अगर समंदर बीच तक नहीं गया फिर आपके घर में जाएगा ही जाएगा। There's a precedent for this because when the Bandra Valley sea link was constructed, there is evidence that after the reclamation for the Bandra Valley sea link, Dadar Chowpatty beach disappeared. You know, so we have proof. We also know that since the reclamation has begun in South Bombay, there has been severe erosion activity in the north of Juhu Beach. So there are geomorphologists who also estimate that Juhu Beach will disappear. And so on this one beach hand, has disappeared too. And there are only rocks here now. Long time ago. Yes, you were saying something. You were saying something. That is an excuse. Eventually, there is going to be a big changeover, spot for this sea link or coastal road. So that is the idea. This is very fundamental. I am saying, that Bombay is blessed with huge, a very lengthy coastline. We have east coast as well as west coast. That's right. Like Mauritius, for example. Yes. So there is no access, there is no concern whatsoever how to make use of this natural resource. We have got almost 1/3 of land mass as national park, Sanjay Gandhi National Park. That's right. So nobody knows what's really happening. Even you mentioned Chowpatty Beach. Chowpatty Beach, as we know it, is where they immerse the Ganpatis. That is the main Chowpatty Beach. But from Marine Line Station to Princess Street flyover, there is already a beach. Yes. It's not known, but there's a beach that is being dug up for this coastal road tunnel. They are going to make a tunnel under the thing. And then that'll come up where? It will come out under Malabar Hill and come out at Priyadarshini Park. Priyadarshini Park. Yeah. बड़ी मुश्किल से वर्सोवा बीच साफ किया एक बच्चा है अफरोज शाह, उसने मिलकर के कुछ साफ करवाया वगैरह वगैरह वगैरह, और 20 के 25 बरस के बाद सबसे पहले हमने खुद देखा ऑलिव रिडली टर्टल्स हैव स्टार्टेड टू कम देयर अगेन. but I think you're going to go and you're going to destroy that too. Really go and see the biodiversity. One would think that it's an urban coastline, it would not have such rich biodiversity, but the marine biodiversity in Mumbai is actually astounding to actually find those kinds of species there. And I think one more thing that we need to stress upon is the livelihoods of the community, because the fishers in Worli are actually daily fishers. They have artisanal fishing practices. There are 8 different types of fishing practices that are only practiced in the intertidal zone. Apart from this, there are various practices in the shallow seas. So they are not fishers who are trawler fishers who go after fish. And both the societies in Worli have filed a petition in the High Court opposing the project, specifically because their livelihood will, their way of life, they will disappear completely. Die out. जी, हमारे जितने मछुआरे हैं आज की तारीख में, जितने भी फिशिंग विलेजेस हैं, वहाँ पर उनके पास कोई काम नहीं है आज की तारीख में. सब लोग घर में बैठे हैं. No, that is not true. Worli, it's a thriving. I'm not talking about Worli. I'm talking about Uran. Uran, Versova, a little bit of Wherever development happens, the Worli people will sit at home very soon. After the coastal road is आखिर में वही होने वाला है. About the farmers instead of the fishers, उनको भी लेना चाहिए ना साथ में. They are also farmers. They are farmers of the sea. And BMC has So not. the way Mumbai is developing, we are standing on Carter Road Promenade. If you just turn around, this is a classic example of how Mumbai is improving. This was a beautiful promenade where thousands and thousands of people used to come every evening. 2.5 years ago, they ripped up this excellent promenade. Yes. Now you can see the trees right now with all the concrete around it, which was pure green before. Yes. I mean, if this is Just called have a look, improvement, please come. how will this tree ever survive? This tree is already dying. Yes. All these trees are already dying. ये देखिए, ये सारे जितने पेड़ हैं, they are already dying. ये बात कहना चाहता हूं कि 2 साल 2.5 साल पहले 3 साल पहले हम लोग भी आया करते थे कार्टर रोड पे, या प्रदीप भाई आप भी आया करते थे यहाँ पे, और आज इसकी दुर्दशा देखिए. ये 2.5 के 3 साल से यही चल रहा है. What are they doing? Is this called improving our city? This tree is going to die eventually. But because why? For what? For what purpose? To benefit who? I really would love to know. Yes, and this is the issue. And all our workers have left us and gone there. I'm from the BWRA, you know. Yes. They've left us and gone to joggers, they're so disgusted with the work going on. joggers too. सत्यदेव जी, ये पेड़ देखिए, ये देखिए, इनकी सारी जड़ें बाहर आ गई हैं. वो देखिए, ये सारे के सारे पेड़ सड़ गए हैं यहाँ पे.
अब क्या कर रहे हैं? क्या हम यहाँ पे एक सड़ी गली मुंबई चाहते हैं? आप जरा बताएं श्वेता जी। BMC thinks that we need to reclaim the seabed and excavate the seabed to construct parking lots. And No other concretize. place to build And parking lots concretize. Except in the most biologically sensitive area. Everything is destroyed. Regarding trees, I will tell you two things. जी, Mumbai has the least tree cover anywhere in the world. Right. We have one tree for every 5 Mumbaikars. yes. Okay? In spite of Sanjay Gandhi National Park, in spite of RA. Yes, because of RA we have 1 per 5. If we Yes. didn't have that ratio would be horrible. Yes. And tell Look at me, this. Just a look at government, this. Oh God, this is. I think we have all traveled all over the world. A government who can make a world-class metro but can't save a tree. There's something wrong with their priorities. अरे कहने का मतलब ये हुआ, ये देखिए अभी अभी हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी सफलता के बारे में हम लोगों ने बात करी। अब जरा इस ओर भी देख लीजिए। अंतरिक्ष तो फतह कर लिया, पर्यावरण को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ये पेड़ जो हैं ये एक और उदाहरण है कि किस प्रकार हम पूरे पर्यावरण को नष्ट भ्रष्ट करके ना जाने किसके लिए हम शहर बना रहे हैं। क्या कब्रिस्तान बना रहे हैं या शहर बना रहे हैं? मेरी समझ के बाहर है। ये क्या है? ये यहाँ पे ईंट गारे पत्थर का कब्रिस्तान बनेगा। स्टालिन साहब आप बताएं। बिल्कुल, पेड़ों की तरफ इनका जो रवैया है बहुत ही दर्दनाक है। आप देखने जाए तो every act is intended to destroy the green cover and kill the trees. Now these trees have been planted by some good citizens and they're about 6-7 years old, but if you see even these trees are getting killed now. यानी इनको चाहिए ही नहीं। जहां पर भी हम जाते हैं, जैसे मिट्टी रिवर की सो कॉल्ड विकास की बात कर रहे हैं, जैसे दहीसर रिवर के विकास की बात कर रहे हैं, हर जगह पर जहां पर भी हम गए हैं, बीएमसी का काम सिर्फ एक होता है, हर जगह पे दीवार बना दीजिए, सीमेंट कर दीजिए, दीवार बना दीजिए। मतलब मिट्टी, गारा, बजरी, सीमेंट के अलावा उनको और कुछ दिखता नहीं है क्या? किला वाला साहब। या ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अनदर थिंग इज इन द नेम ऑफ सो कॉल्ड डेवलपमेंट, जी आप बताइए इन लास्ट 10 years जी have we created any good public space? And जो we have- भी we have public destroyed space है, all we are the public destroying it. spaces. Exactly. All the public spaces that were there have been destroyed. Sir, every open space in the city is under kabja. जी There is a beautiful park on Linking Road, Pathwardhan Park. They want to make a parking lot under the park. Now let's take a look here. Satyadev ji, इधर देखिए. Let's take a look here. What is this? What is going on here? Will somebody explain to me? Will you are an architect. You are an architect. Both of you are environmental experts. What is this in aid of? जो टनल बन रही है अभी, जो बिल्कुल समंदर के नीचे जाएगी और आखिर में मलाबार हिल के नीचे से गुजरती हुई प्रियदर्शनी पार्क के पास निकलेगी, उसकी वजह से मरीन लाइन स्टेशन के सामने, चर्नी रोड स्टेशन के सामने, वहां पर जो बीच होता था, जहां पर पहले वाटर स्पोर्ट्स भी हुआ करते थे, उसका भी सत्यानाश कर दिया गया है। Between Churni Road and Marine Line Station, there is a beach even today. Yes, and it will disappear. No, but I think even this whole idea of rehabilitation, na, ki we will, because what they did is they are now getting National Institute of Oceanography to do a study Ji. for mitigation and Ji. for marine Right. biodiversity management plan. After the work has already started, Right. what's the point in doing a study once the destruction The has study already ought to have been done before. Study had to be done before. Isn't that the Did usual? study. I told you there's- They did the study. They would have never been able to do the work. Right. Sir, they studied Western Express Highway Yes. after bulldozing entire highway Yes, for Metro 7 yes. और जो 200 feet wide road, जी. after the study of 3 years of work, they found that it's not adequate. This is not adequate. So now they are making it 230 feet, 30 feet. That is like asking the old Arthur Anderson and Enron to come back to tell us whether the Dabhol power plant is profitable or not. That's what you're doing. The studies or the Right, wonderful, absolutely wonderful. Just like Vijay Mallya coming back to tell us as to how he is not responsible for the destruction and complete collapse of the Kingfisher Airlines. जी बताएं. This is supposed to be the storm water discharge. Right, let's take a look. देखें, यहाँ Let's take a पे look. जो पानी This is that का Boron discharge- Nala, right? Boron Nala? No. No, okay. So now this pipe will be submerged in the high tide. Yes. So which means the sea water is coming in. Right. Which means against your water in the sea will not come, in the city will not go out to the sea. So you are creating more floods by doing this. Right. And let's take a look here. I
think one more point to be noted is that the detailed project report or the DPR for the coastal road project in fact said that after the reclamation of the Bandra-Worli ceiling happened, there was more flooding in the Mithi River and more people died because of the flooding in the Mithi River. So this is actually the detailed project report of the coastal road project. और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि 2005 में 26 जुलाई 2005 के बाद मुंबई करों को मालूम पड़ा कि उनके शहर में एक नदी भी है जिसका नाम मिठी नदी है। उसके बाद मालूम पड़ा कि भाई एक नदी नहीं है, चार नदियां हैं। दहीसर है, ओशिवारा है, बोईसर है। जी जी और जो आप बोल रहे हैं, let's take a look here. This is like a desert. Let's go across to where Mr. Bathena is saying. Let's take a look at what's happening over there. Make that area exactly look like this. Yes. So you'll at that point you'll get to. So which means what they're really doing is they're dumping all the stuff over there. यानी वो उसको डंपिंग ग्राउंड बना दिया है ताकि ये बाकी जो मैंग्रोव्स बचे हैं ये भी खत्म हो जाएं। कहने का मतलब ये हो प्रदीप जी। Yes, sir. We see wherever there's development, they're not taking people who are concerned with the environment along with the team, and that's why we see massive. जी उधर देखें। As you talked, you know, the disappearance of the beaches, and the fall of the quality of water. Yes. Now these are the things that are actually going to impact Mumbai and Mumbaikars. अब आप इस तरफ आएं। When you talk about Mumbaikars, you're talking the entire coastal belt of Mumbai. Right in front of us we can see. जी। You can see they have dumped some stones out there, and you can see the dead mangroves, and you can see this side is already dead. Because this is the most important destruction of mangroves which is happening right here. This is murder taking place right in front of our eyes. ये यहाँ पे मुंबई की कोस्ट लाइन जो है उसका कत्ल हो रहा है हम लोगों के सामने, और मैं ये बता रहा हूँ कि आज की तारीख में हम लोग सब बेबस हैं। प्रॉब्लम ये है, तकलीफ ये है कि हम लोग सब बेबस हैं क्योंकि मुंबई करों का जीवन जो है वो इतना ज़्यादा व्यस्त है, वी आर ऑल बाउंड by the constraints of time that we don't know what to do. You mean this? Yes, right here. आप ये देखिए ना, ये मैंग्रोव्स जो हैं ये सारे के सारे जान करके मार दिए गए हैं क्योंकि ये पूरा मलबा आपने यहाँ डाल दिया है जान के ताकि अंदर तक पानी ना आ पाए। हमें तो ये शक हो रहा है कि ये पूरा कार्टर रोड का ब्यूटिफिकेशन जो है, इसका सुंदरीकरण जो है, सौंदर्यकरण जो है वो इसलिए इतना वक्त ले रहा है क्योंकि इनको ये सारे मैंग्रोव्स खत्म करने हैं, इसलिए लगा ऐसा रहा है। Now let's take a look over here. That's where we'll have to finish. Please be very careful as you walk because lots and lots of very very sharp stones in this area. ये एक ज़माने में मैंग्रोव हुआ करते थे, आज की तारीख में And this used to be thick like what you can see there. Yes. It used to be exactly the same. Even 2 years back, I remember it was absolutely thick. It was there till Now tell me how many thousand people walk on Carter Road every day? Can they not see what's happening? And This the is the same- problem with our city. Same We thing with wear the- blinkers. I don't blame anybody. मैंने कहा कि वहाँ पे जो आपको छोटा सा श्रब जैसा दिख रहा है वो जी। स्पीशीज है राइजोफोरा, वो बहुत राइजोफोरा, कम, वो जो नीचे है। हाँ जी, नीचे जो है जी। अब देखो उसमें पानी जमा कर दिया और सब तरह से उसका पानी बंद कर दिया जी। है, अब वो भी मरेगा। और ये रेयर स्पीशीज है, मुंबई के कोस्ट में बहुत कम दिखता है। इतना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इसमें आना चाहिए। अगर आप देखें वहाँ पे जो बाउंड्री है, वो जो पिलर है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पिलर है। जी। अब फॉरेस्ट के अंदर ये काम चल रहा है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो मैंग्रोव सेल है उनको चाहिए यहाँ पर इमीडिएटली आकर के इसको पानी का सप्लाई को रिस्टोर करे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक चैनल बनाई जाए ताकि ये पानी यहाँ तक आ सके। चैनल है वहाँ पे बंद किया है उन्होंने, was इन्होंने never बंद there किया before. है, ये It has बंद been कर दिया है। Filled. जो ट्रेलर है हमें दिख रहा है कोस्टल रोड का ये। आप वैसे ही समझिए, जी। बट अभी आप But you should देखेंगे see the scale of that activity. Exactly, That just is imagine. horrifying. We'll do that too. That's Exactly. you know. We'll do even that the too. pictures are जी, horrifying. स्टालिन साहब आप बताएं आगे इस जी, विषय में बिल्कुल, क्या इस- करना है? इस- इसका सॉल्यूशन बताएं ना, ये तो क्राइसिस हो गया। आप सॉल्यूशन क्या? सोल्यूशन यही है कि आप समंदर पे विजय कभी कोई किसी ने आज तक हिंदुस्तान इंसान का इतिहास में किसी ने समंदर पे विजय नहीं कर पाया है। इसको चाहिए कि समंदर को अपना जगह दे और जो भी डेवलपमेंट करना चाहे वो समंदर से दूर रह के करें, ना कि उस पूरा कोस्ट लाइन और लोगों को जान माल को खतरा पहुंचा के हमारा जो नैसर्गिक जो धरोहर है हमारे बीचेस को ख़त्म करके इस तरीके का डेवलपमेंट मुंबई को नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह हो सकता है कि आगे जाकर के जैसे बथेना साहब बता रहे थे, आगे जाकर के अगर आप इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हो सकता है कि आपका ये कार्टर रोड प्रोमेनाड जो है ये भी डूब जाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी 100% sir, 100%. If you come on a monsoon on a rainy day,
Carter Road floods because the entire water from Pali Hill cannot go out into the sea. Yes. And it's the same story throughout the city. Yes. Why does the city flood? Because the rainwater can't go out into the sea. That's right. Because the sea is higher than the drain outlet. Yes. It has to Now, go naturally. Yeah. it has to go. It Water has to can go only from flow a height. It has to go from a height by down. gravity. Water cannot go up. There cannot be capillary action which pulls the water up. No, That can't but, happen. No, but this is the new thing. That is why BMC is having pumping stations. Wow. And they are spending hundreds. That means more money. Yeah, I think one needs to really call out this. It's a huge scam. Even the pumping station, the Brimstoward project, there are natural estuaries which they are channelizing into nalas or stormwater drains by building embankments on both sides, roads on both sides, cutting the mangroves to say that we want to do flood prevention. Mangroves कहने का in fact मतलब ये are हुआ। ecologically Right. wetlands which actually absorb the flood water. But they don't give you money. No, they're destroying Absolutely. it. So that actually, I'm telling you, it's an issue. They're trying to create land. It's a land grabbing project. It's an ocean And grabbing that too on the western coast. It is not. It's On not the eastern coast no, also. it's not about public space. It is not about 1.5 lakh rupees per not square about foot. improving Right. quality of life. It is about creating more land and more money. I think यानी that's कहने का what मतलब ये needs to हुआ really understand. कि ये मैंग्रोव्स का जो कब्रिस्तान है यहाँ पर 2 लाख रुपए फी स्क्वायर फुट में आगे जमीन मिलेगी। That's, ये the end, प्रदीप that's जी। the end of the old Carter So Road. do you know Right. how slums are formed? You're creating a new Carter Road. Right. Promenade. You know how उसके- slums उस- are formed in Mumbai. उस विषय में बाद में बात करेंगे जी। सर। We have really it's all run out of money. time. We have really run out of time. कहने का मतलब ये हुआ कि ये मैंग्रोव्स हैं, इनका हम कब्रिस्तान देख रहे हैं और ये कब्रिस्तान कोई नेचुरल कब्रिस्तान नहीं है। जब आदमी का देहांत हो जाता है, स्वर्गवासी हो जाता है, तब जाकर के उसको कब्रिस्तान में शमशान में लेकर के जाते हैं। यहाँ पर जान करके कब्रिस्तान बनाया गया है, जान करके इनका गला घोंटा गया है, जान करके ये किया गया है कि आगे जाकर के कोई प्रोटेस्ट ना कर सके। 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद जब यहाँ पर जमीन बनेगी, बिल्डिंग बनेगी या कुछ और बनेगा, तब ये कहा जाएगा भाई कौन से मैंग्रोव, क्योंकि सारे मैंग्रोव तो तब तक मर चुके होंगे। That's it. Absolutely. From Pradeep and me, right here on the promenade of Carter Road, where we are witnessing the murder not only of mangroves, but the murder of a city. This is Rajiv K. Bajaj for the RKB Show on News World India. That's it. That's all we've got for you for the moment. Keep watching. We'll be back with you tomorrow at 10:30 p.m. Thank you. Bye-bye.